This is the first time I'm meeting her and I'm so excited about it. And that's when you realize how, you monetize misery, you also monetize negativity. मैं कॉलेज में थी तब से मैं काम कर रही थी, तो करते करते आई एंडेड अप इन मीडिया. फिर मैंने मीडिया थोड़ा सा सीखा. मीडिया वाज वन पीस. मैंने सेल्स भी किया है, मार्केटिंग भी किया है, एड्स भी किया है, मैंने डेटा एंट्री भी किया है, सब कुछ किया है. और करते करते मीडिया वाज समवेयर वेयर इट जस्ट काइंड ऑफ किक्ड मी. लाइक इट, आई लव्ड इट. लाइक आई वुड लव गोइंग टू प्लेसेस. Within a year तुमने मोनेटाइज करना शुरू कर दिया था? मैं वैसे बहुत गुजरात, मतलब मेरा पानी गुजरात का घुसता है ना यहाँ. ये वाला प्लेबुक मेरे को बाद में देख के जाना, ठीक है? When I started for the first time in 2014, कॉलोनी की आंटीज were like, "Hi Bitchaari, she's starting alone, unmarried है." It quickly went on to becoming बड़ी तेज है, bitch type की, about something they had no idea about. And I realized then that this is the life of an ambitious woman, living in the spectrum of bitch to Bitchaari, our opinionated, ambitious Bharatiya Nari. Welcome to the 5th episode of the Bitchaari podcast. I have Shruti on the podcast today. By the way, I've been talking a lot about how shameless I am in asking people for help, for leads, for things. She's the live example. I have been messaging her for years on WhatsApp, on email, on LinkedIn. Finally, she has responded. This is the first time I'm meeting her and I'm so excited about it. We've actually chatted multiple times because I mean, we come from the content space. She's the founder of, I remember Chaaipani because, I think it would have been 2014 when I started my content journey, and I knew every founder in the space. And now you are the founder also of Indian Action Project. Would love to learn and, learn everything about your journey. Of course, I've seen your journey and it's been, I think, 9-10 साल तो हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए होंगे at least. हाँ, 8 साल of starting up for the first time actually. So tell me about Chaaipani. Why did you start? And how did it go? मैं कॉलेज में थी तब से मैं काम कर रही थी, तो करते करते आई एंडेड अप इन मीडिया. फिर मैंने मीडिया थोड़ा सा सीखा. मीडिया वाज वन पीस. मैंने सेल्स भी किया है, मार्केटिंग भी किया है, एड्स भी किया है, मैंने डेटा एंट्री भी किया है, सब कुछ किया है. और करते करते मीडिया वाज समवेयर वेयर इट जस्ट काइंड ऑफ किक्ड मी. लाइक इट, आई लव्ड इट. लाइक आई वुड लव गोइंग टू प्लेसेस एंड टू स्टोरीज एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देन आई बिकेम अ न्यूज़ एंकर विद टीवी मीडिया. और वहाँ पे जाके एक बहुत ही अलग दुनिया से देखी थी. फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेल्स पार्ट ऑफ इट भी समझना शुरू किया, लाइक व्हाट सेल्स. एंड दैट्स व्हेन यू realize how, you monetize misery, you also monetize negativity, you monetize somebody's murder and rape, right? And everything is being monetized, and fairly so, because it's just business. And that's when I thought, okay, but why can't we also tell stories of people who are doing really cool things in bank, right? Yeah. I have seen people who've created so much of impact. उन्हें कोई जानता नहीं क्योंकि उनको Instagram की रील पे डांस करना नहीं आता. Yeah. So algorithm उनको support भी करता है. There are so many people who are doing really cool stuff, and I remember pitching this idea to multiple media platforms, but back then, positive story was not a very trendy thing to go. And then I thought, and age was on my side, तो मेरा college खत्म हो रहा था, and I had to go for my MBA. Yeah. And then I realized कि अच्छा जो MBA में अगर चली गई तो मेरे को लोन लेना पड़ता, क्योंकि पापा तो दे नहीं रहे थे उतने पैसे. तो मैंने बोला लोन चुकाऊंगी, फिर 5-6 साल हो जाएंगे चुकाने में, उससे उतने में शादी वादी करवा देंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो ये चीज़ कभी कर नहीं पाऊंगी मैं. So I started Chaaipani as a 1-year project. So it was just 1 year. Me and a friend of mine called Himika, और उसने ना नया DSLR कैमरा लिया था. तो हम लोग एक्टिवा पे जाते थे, खाली लोगों की कहानियाँ, मतलब वो फोटो लेती थी, मैं कहानियाँ लिखती थी, डॉक्यूमेंट करती थी, उससे ब्लॉग पे डालना शुरू किया हमने. एंड दैट वाज अ 1-year प्रोजेक्ट. आई टुक लाइक अ 1-year डेडलाइन फ्रॉम माय पेरेंट्स. अगर 1 साल में नहीं होता, द कंपनी विल ऑल्सो टेक मी बैक. एंड इफ आई वांट टू गो फॉर MBA तो मैं कैट भी क्लियर कर लूंगी. आप मैथ्स थोड़ी ना भूलते हो. तो मैं बोला मैं वो भी क्लियर कर लूंगी. तो दोनों ऑप्शंस हैं मेरे पास. जस्ट इफ 1 year if I don't make money now. And that's how Chaaipani just kicked off, because it just went with my one core skill that I had. Within a year तुमने मोनेटाइज करना शुरू कर दिया था? मैं वैसे बहुत गुजरात, मतलब मेरा पानी गुजरात का घुसता है ना यहाँ, तो मतलब यूपी वाला भी और गुजरात वाला भी. ये वाला प्लेबुक मेरे को बाद में देख के जाना, ठीक है? That's how I also started. So I completely like feel you in terms of कि मुझे लगता था कि यार कंटेंट ही एक चीज़ है जिसमें मेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. इतना इंस्टिंक्टली आता है कि आई नो कंटेंट. दैट इज द वन इफ आई कुड से कि अगर लाइफ में दुनिया में पैसे ना हो बट मैं उठ के कर लूँ,
But now you will also realize as a content creator, you have to constantly Yeah. learning the technology part, Yeah. right? Like maybe the skill is something जो आपको आता है या नहीं आता है, Yeah. but you have to keep honing it because लोगों का audience भी तो इतना change हो रहा है ना, उनको क्या चाहिए वो इतना change हो रहा है. Generation हमने तो change होते हुए, Yeah. now we are at that age where like a whole 2 new generations have come and they are now grown up and getting married. Yeah, in terms of content creation also, 8 साल में ही I think 2 generation मतलब, और 2 क्या मतलब 5 कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी टेक्नोलॉजी, जनरेटिव AI नाउ. सो वी हैव सीन, आई थिंक वी वर एट अ गुड टाइम. You know, audience अब बहुत ही instantly अपना feedback बता देती है कि उनको पसंद आ रहा है content या नहीं पसंद आ रहा है. टोटली. I think it's a everyday job as a content creator. मतलब I see young people now जो एकदम छोटे छोटे गाँव में रह रहे हैं और they have become content creators and the kind of content they put out is amazing. And आप देखो उन्होंने जिस तरह से अपने घर में फ्रिज लाना, अपने घर पे टीवी लाना, like these are things that parents would have never imagined, but these girls have been able to do that just by creating YouTube. No, totally. In fact, I would like to pause and kind of, take a step back and talk about, again, where do you come from in Gujarat, and where did you go to college? And tell me a little bit about your family as well. What do they do? Geographically, I come from, वैसे हम लोग मथुरा से हैं, so generationally we are from there. My grandfather relocated to Gujarat. My father was born in Kutch. I was born in Kutch in Gujarat. Then we kept relocating in Gujarat. पापा का जहाँ जॉब होता था वहाँ जाते थे. Mostly majority of the time was spent in Baroda, Ahmedabad and Gandhinagar. I did my schooling from Ahmedabad. फिर मैंने कॉलेज भी अपना अहमदाबाद से किया, सेंट जेवियर्स में से. My father is he's a service professional and he'll be retiring in like probably some 4-5 years now. I hope so. My mother is a housewife. So yeah, that's the kind of background. What is the Dabangg family? Oh, so my mama's side and everybody, they are very like, that's the muscle power and this is the brain power. So both the families get married together. That's the kind of combination I have back home. Yeah. I'm sorry, you have to tell again. What is muscle power? So I think at this point, okay, एक टाइम था जब मैं बोलती थी कि बहुत ही यूटोपियन दुनिया में कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो, बट आई थिंक यूपी में अगर आपको सर्वाइव करना है ना तो आपको दोनों पावर चाहिए वहाँ पे. लाइक यू नीड मसल पावर ऑल्सो, you need brain also. Like I still remember there was a legal case that was going on. It went on for years and years. जो हमारा किसी ने घर पे कब्जा कर लिया था. Remember फिर वो कहीं वापस से वो स्टे आ गया उसके ऊपर, and then my mom was like अच्छा मैं जाके करवाती हूँ. And she took all of us to मथुरा और हम सारे बच्चे लोग थे वहाँ पे. And she goes to this house and ये लोगों ने 8 साल से हमारा घर खाली नहीं किया. And then she goes like बहन जी आप घर खाली करवा देना, मैं बाजार में बच्चों को खाना वाना खिला के आती हूँ. और फिर हम पूरी कर गई, मम्मी वापस आए तो उन्होंने ऑफकोर्स 8 साल से जिसने खाली नहीं किया वो अब क्या खाली करेगा. एंड देन माय मॉम इज लाइक अच्छा बच्चों जो भी दिख रहा है मंदिर को छोड़ के सब फेंक दो बाहर. और हम तो वी वर किड्स राइट, वी वर 15-16 चिल्ड्रन और हमको जो दिख रहा है हम फेंक रहे हैं, हम टीवी फेंक रहे हैं, हम ये फेंक रहे हैं बाहर. दैट vacated the house. Yeah, that night they vacated the house because they knew they cannot mess up with my mother because of the that she has, the back-end power that she has also. And that's just inherently there in her. She's like हाँ मतलब मेरा है तो मतलब मैं क्या इतना 8 साल तक लड़ाई करूँगी भाई तुमसे. And she was like या तो मंदिर को. And I remember this woman एकदम जो मतलब वो सीन था where she's like बहन जी आप जा रहे हैं हम अंदर. she's like चाय पिला दो शाम हो गई है. And then this woman goes to the kitchen to make tea and then she's like बच्चों मंदिर को छोड़ के सब फेंक दो. But this backing that you're talking about, is this politics? Is this just upbringing? Either you are, so I think this is how the setup is in Uttar Pradesh and you know like a lot of hinterlands where either you are the prey or the predator, right? And you have to choose between being one of those. Wow. So sometimes you know like most of these Dabangg people you will see उनके पास पैसा भी नहीं होता है खाने के लिए, but जिगरा बहुत ज्यादा होता है कि हाँ मतलब दबेंगे नहीं वैसा वाला. That is so interesting. Wow. Kudos to Shruti's mom. सब फेंक दो, मैं तो घर मिला कि नहीं वापस. So that was my childhood learning. कि हाँ मतलब like this is how you survive. Like you go the right way, you try as long as possible to the good, the nice way. You know जो आपका है जो हक का है वो मिल जाता है. When my parents got married, my father's salary was about 1,600 rupees. मम्मी को बस इतना पता था शहर में लड़का काम करता है तो मेरी मम्मी को लगता था कि बहुत अच्छा कुछ बढ़िया काम करता है वो. यहाँ पे आके उन्हें रियलिटी पता चला कि मतलब 1600 का सैलरी है और इसमें आपको पूरा घर चलाना है. So we come from that and there was no support to both of them. मम्मी के घर वालों के पास में तो वैसे भी उस वक्त उतना वो नहीं था. पेरेंट्स साइड ऑल्सो तब दहेज वहेज का भी बहुत सारा सीन चलता था. तो
both of them started together, they've built everything together. मतलब I've seen at times अभी मम्मी ने अगर गाउन एक ले लिया तो घर में झगड़ा हो गया है कि जो हम नाइटी पहनते हैं और अगर फट गया वो सिल के अब वो सिला भी नहीं जा रहा है तो मम्मी ने अगर बाहर से ले लिया है तो उस चीज़ को लेके झगड़ा हो गया घर के अंदर कि क्यों लिया आपने गाउन, मतलब लाइक हाउ विल वी मैनेज द बजट नाउ. Wow. We've come from that, but I think knowledge has played a very important role in my parents' का life. Like my father has always kept studying. मतलब अभी उन्होंने अपना PhD खत्म किया है 5 साल पहले. Yeah. So अभी दूसरा PhD he is planning already. Yeah. What PhD? So he did in religious organizations का management system कैसे चलता है. So he's a HR professional and he keeps digging into all these succession planning. So he's done succession planning in religious organizations like Swaminarayan and ISKCON, BAPS and सब में. So he did that and he just keeps doing things and he keeps upgrading himself. Yeah. So I think and over time, like the more you study, the more knowledge you have, it compounds over time and that reflects into more earning opportunities. सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी आएगी. So that is something जो हमने घर में देखा है. And I think that's why we are probably in a much, much better position than we used to be. Wow. And what is the second PhD that he wants to do? He's figuring, like the first one was in succession plan. Because we live in a time where you're like, अच्छा काम करें कि पढ़ें कि अभी कमाएं कि क्या करें. But tell me, so obviously you've had a bit of an interesting family and an interesting experience as well with your family fighting for a house, etc. Tell me how has your journey been? What did you go on to study? And did you always want to become an entrepreneur? ऐसा कुछ, because you come from a service family, तो ऐसा तो नहीं है कि पता ही है कि service मतलब अपना business चलाएंगे, तो कैसे हुआ ये? So I studied, पहले मैंने engineering किया अपना 12th में science करने के बाद, because that was the immediate peer pressure, मतलब family pressure नहीं था कुछ भी. It was just because my friends were doing it and I thought I could do that. और वो time पर मुझे था मुझे astronaut बनना है. So I did my engineering. I got into a good college. But first semester, I realized this is not me. Like I can't do this anymore because it was just generally draining for me. Yeah. And that's when I decided. And then it took me another 6 months to tell this back home क्योंकि उन्होंने कोचिंग में इतना पैसा डाला होता है, फिर स्कूल पैसा डाला होता है, उसके बाद आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो उसके फॉर्म्स इतने सारे होते हैं, मतलब आई थिंक 40-50 आपके फॉर्म 1000 तो आपके फॉर्म्स में चलाते हैं. And they had spent so much of money on me and then to tell them that okay I don't want to study this without knowing what I want to study. Yeah. So वो करके मतलब फिर घर पे बस एक दिन बोल दिया कि मुझे नहीं करना, नहीं मजा आ रहा है इसमें. फिर जो भी लड़ाई झगड़ा होना था वो बहुत सारा. माय पेरेंट्स आर वेरी प्रैक्टिकल दैट वे, मतलब 1-2 दिन से ज्यादा लड़ाइयाँ चलती नहीं हमारे घर में. तो बस हाँ वो उसके बाद में माय फादर्स इमीडिएट क्वेश्चन वाज ओके लाइक बट व्हाट डू यू वांट टू डू देन. एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो. तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ना. माय फादर इज अ BE स्टूडेंट एंड आई वाज लाइक आपने BE किया, मैं भी BE कर लेती हूँ. एंड ही इज लाइक हम लोग BE वालों को 10,000 की सैलरी देते हैं. माय फादर इज अ HR प्रोफेशनल राइट. आई वाज लाइक हम BE करने वालों को 10,000 का सैलरी देते हैं. आई वाज लाइक 10,000 में तो मेरा नहीं चलेगा, मेरे खर्चे काफ़ी हो गए. So that's when I decided okay I could study psychology because this was something that could be applicable in anything I decide to do going forward. फिर भी नहीं पता था क्या करना था, इसलिए मैंने कॉलेज के day 1 से ही I started working. So I started interning. I made myself a whole 24-month का plan for 2 years. 2 महीने मैं यहाँ internship करूँगी, 2 महीने यहाँ करूँगी. So I had a whole plan charted out on a diary like this. And I stuck to that plan to the T के हाँ मतलब कॉलेज 12-12:30 बजे खत्म हो जाता था, उसके बाद मैं फ्री होती थी. तो पहले ये आइडिया था कि मेरा 24 months तक आई विल डू इंटर्नशिप्स, बट फिर मुझे जॉब ऑफर्स भी आने लगे कि आप 12 बजे खत्म हो जाते हैं तो 2 बजे से you can do a 10 o'clock तब का shift. So I started working also. How did you start getting jobs while you're studying? So social media has been my biggest, मतलब till date like मेरा मैं बताऊंगी 80% of the business has come inbound on social media to me. And I remember the first job I had was in a company called Social Udan. And this guy, the founder, used to follow me on Twitter and then he said, okay, we are hiring somebody. No, you tweet really well and we need somebody to tweet for our clients. Can you do that for me? And तब मुझे पहली बार पता चला कि ये भी एक job होता है. तो and I was good on social media. I was funny. and तब आप क्या करते हो, आप shit posting ही कर रहे होते हो ना. And then you start learning and then मैं YouTube पे सीखती थी how to manage social media and things like that. That was the first job. फिर आप ये job करते हो, फिर उनकी clients आपको कोई बोलता है reach out अगर they are shutting down the company then they will refer you somewhere else. तो ऐसी फिर जो TV वाला मुझे मिला था वो मेरे कॉलेज के सामने बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगाया था उन्होंने that this was a news channel that was starting up. It's a youth channel now
And they were looking, at that time, they were hiring interns and news anchors in multiple positions. So I applied as an intern. And they called me for the interview. Interview ke baad mein, the channel head was just like, okay, go and give a screen test also. And my Gujarati was not very good at that time. But मैंने फिर screen test दिया और उसके बाद में then I like directly call यही था कि आपको news anchor बनाया. So I was one of the first 7 news anchors of the channel. So I remember मैंने गुजराती इतना सीखा है. तो जो makeup artist होता था ना, बहुत ही nervous हो जाती थी कैमरा से पहले. एक तो लाइफ में कभी कैमरा इतना फेस नहीं किया आपने. और उसके सामने फिर आपको डिबेट्स करने और ये सारी तो मेरा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता था हिंदी में या इंग्लिश में. एंड दिस इज अ प्योर रीजनल चैनल. सो माय कैमरामैन यूज्ड टू प्रेप मी अप एंड यूज्ड टू मेक मी सिंग गुजराती सॉन्ग्स जोर जोर से कैमरा मेकअप रूम में तैयार करते वक्त मुझे, जस्ट टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट. माय चैनल हेड वाज आल्सो वेरी नाइस. लाइक ही टोल्ड एवरीबडी इन द न्यूज रूम आल्सो कि इससे गुजराती में ही बात करो, मतलब डोंट रिप्लाई ओनली टू हर इफ शी इज नॉट टॉकिंग इन गुजराती. तो मैं अपनी एग्जाम्स भी मैंने जॉब करते करते दिया है. मतलब अगर मेरा एग्जाम है कल तो मैं आज पढ़ भी रही हूँ और दे वुड ऑल्सो मेक माई शेड्यूल इन अ वीक. इसका एग्जाम अफेक्ट नहीं होना चाहिए. Wow. But where do we get the chul from, right? Like, because I can feel you, right? That you started working while you were studying, and maybe you were doing that because you wanted to figure what you want to do. This comes from a place of seeking validation also, right? Constantly that I do not want to limit myself to somebody who's just a BA graduate. तो वो बहुत ही internalize वो एक चीज़ होती है, and you want to constantly keep proving it to yourself and to other people. And for me, like, it's come in therapy for me that I always wanted to prove it to my father. That okay, I'm a good child because I have seen him sacrifice so much for me. Like, it is insane amount of things that he has sacrificed. Yeah. तो हमेशा से internally बचपन से ये हो गया कि मतलब मेरे पापा खुश होने चाहिए मुझसे, मैं जो भी करूँ. मम्मी तो चलो ठीक है, वो खुशी रहती है वैसे भी, लाइक, बट वो पापा को बस प्रूव करते रहने के लिए कि यू नो आई वांट टू कीप गेटिंग अवार्ड्स एंड कीप शोइंग इट टू हिम, लाइक कीप गेटिंग न्यू जॉब्स एंड गेटिंग टेस्टिमोनियल्स. सो आई थिंक फॉर मी दैट एट दैट टाइम मोर देन फिगरिंग इट आउट, सी आई कुड हैव लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. मतलब आज भी मेरे मम्मी पापा ने इतना कमा लिया कि मैं एक भी पैसा ना कमाऊँ, जितना खर्चा उतना करती रहूँ, तो भी आई कैन लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. बट ये था कि हाँ उनको प्रूव करा है, फिर उनको प्रूव करने के चक्कर में फिर दूसरों को प्रूव करने के लिए आप तैयार हो जाते दैट यू नो यू कॉन्स्टेंटली वांट टू टेस्ट योरसेल्फ एंड यू वांट टू मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल टू सी लाइक ओके कैन आई डू दिस, कैन आई आल्सो डू दिस, कैन आई फेस द कैमरा, कैन आई डू फाइनेंसेस, कैन आई डू अकाउंट्स. और ये करने के चक्कर में क्या हुआ ना, वो फुल पैकेज फाउंडर जो होता है ना वो अपने आप बन गया, बिकॉज अ फाउंडर नीड्स टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस P&L आपको समझ में आना चाहिए. Correct. So yeah, I mean ये सब करते करते I learned coding also. I mean yeah, so I've done my fair bit of learning. So tell me next, what did you, so of course you were then a news anchor, 2.5 year you've done this. What was the learning and why then Chaaipani? I'm assuming after that you. So उसमें so news channel में like I said, like I've dabbled into multiple things. मैंने production भी देखा है, मैंने sales भी देखा है, advertisement भी देखा है, मैंने content creation, editing भी देखा है. So I could see all of that and I was also the face of my show. Yeah. So I've seen that and I've also been a reporter. So I've also seen the ground. So all of those experiences combined. So हाँ मतलब एक चीज़ मुझे हमेशा से ये था that okay, what I'm doing is not adding a lot of value to somebody's life. Okay, somebody has passed away, somebody has died, somebody was murdered, somebody had a misfortune, but what value does it add? Because itna negativity already aa gaya hai har jagah pe, and that's when I was also meeting people who were doing really cool things, but those stories were not getting accepted because they were really not TRP friendly. Yeah. I think back then our audience was also not that matured कि हाँ चीज़ों को वैल्यू करना शुरू करें. तो ये करते करते फिर मैंने जो भी स्टोरीज वहाँ रिजेक्ट हो जाती थी, तो मैंने जो चायपानी मेरा जो ब्लॉग था, इट यूज्ड टू बी चायपानी biscuit.blogspot.sons. एंड तब मैंने चायपानी डोमेन खरीदा था. मुझे यहाँ पे कंपनी में जाने के बाद पता चला कि डोमेन भी एक चीज़ होती है जिससे आप खरीद सकते. Of course. या सो आई बॉट दैट. और फिर मैंने वहाँ पे जो भी रिजेक्ट हो जाती थी यहाँ पे स्टोरीज में थी, वो वहाँ पे डालनी मैंने शुरू कर दी. एंड देन दैट स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ ऑडियंस एंड माई चैनल ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग अ नोटिस ऑफ इट. एंड मतलब फिर ये मेरा MBA वाला टाइम आ गया था. And that's why I told my channel head and my parents and everybody that I want to give this 1 year. If it does not work out, I'd come back. Or I will see what I want to do. Dude, that is such a smart thing to do. I mean, you were at a media company and you only took the rejected stories and made a blog out of it. And this was not a loss or a conflict of interest. Yeah. One. In my editors and my fellow news anchors used to share these stories and they used to keep posting it. Just because this does not have a space in that particular business model does not mean that it cannot become another.
I was actually talking about this earlier that school में जब थी तो I didn't have female friends only. I had some, but then I realized कि उनसे हमेशा fight हो जाती थी तो क्या फायदा है? When you are in a group of girls, then your chances of standing out is much lesser than you are in a group of boys. तो हम बहुत tomboy बनने की भी कोशिश करते हैं स्कूल में, and you know the whole syndrome of you're not like other girls. Yeah. I think this is what I think that's come for me in my therapy, that you want to stand out, and it's just an easier way to stand out. Maybe I do not like football, but I will just pretend to like football to be accepted by that group of people and be like that cool girl of the group. But now I've decided, no, like if I'm a girl, I want to be surrounded. I'm not like other girls. हाँ. I am other girls and all these girls. Did you have friends who were female founders then? That was a very lonely first few years. Now I do. I surround myself with feminine energy. I love it. I am what I am. तो कोई लड़के लोग, पता नहीं लड़के लोग अभी भी ऐसे, मैंने एक दिन ट्वीट किया था तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी. लड़के लोग अभी भी ऐसे तो प्रपोज करते हैं ना, oh, you're not like other girls, you're different. What do you say to that? पहले मैं भी फ्लैटर होती थी भाई, अब तो मैं मतलब सीधा ब्लॉक ही, मतलब अब ठीक है भाई, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है. मतलब like you cannot put down other women to put me up on a pedestal. Like that does not work that way. So Wow. you want a new pickup line? Very interesting. Very interesting. Tell me, so Chaaipani again started 2015. I'll keep going back to that because that is, I'm selfish. I just want to become successful. This is my shortcut. Of course, मैं तंग आ गई श्रुति यार. I'm a fan, and of course, I mean I've seen your journey, so it's interesting. Now you're on to your next startup, and I'm assuming that by now you have worked with or paid or have had full-time employees over 200 or over 300, right? And that's the magical part of being a founder, right? I mean, being responsible for people's livelihood is the high, right? So tell me कि Chaaipani का फिर 2015 में start किया. When did you start monetizing it? How is it going today? What's the scene like right? Their platform where we were telling stories of people. Yeah. We saw a shift happening in the audience towards videos. So we got into videos, and we had that expertise also then. We had really good team members. ये stories बताते और advertisers के साथ काम करते then advertisers started reaching out saying, okay, if you're telling stories of people so effectively, why don't you tell our stories and blend it with stories of people? Yeah. So then we started the vertical, अपना content studios का vertical, which is our agency vertical now. Where we handle storytelling for other clients and their communication. So we take up communication mandates for brands. Yeah. And then we work with multiple agencies and freelancers and PR professionals and media professionals to tell those stories more effectively. That's awesome. Chaaipani is now a media company and a content company. That's awesome because I know in fact, multiple times, just to take advice, I've spoken with founders who, have a lot of money to spend on the media company. And the one thing that they told me was, कि यार media company है, तो cash burning game है. It's cash burning, dude. Like, तो मेरे को ये इन्होंने बोला who have like millions in funding because they come from pedigree, etc. Actually, I'm also little pedigree, but not that much. So, but he said कि अगर because at some point I was deciding कि यार मैं ये अक्कर बक्कर करूँ या योसो करूँ, how does it work, etc., right? And he was like यार and I was like यार we have millions of views, आ ही जाते हैं ये वो. And he's like, if you want to run a content company which has stories, then it's a cash burning game. And if you don't have cash, you will not make money. I said, how do you become big then? Right? You see your story, most of the revenue also comes from events and things like that. Right? It's Correct. Never content. So content is a great way of connecting with your people to sell the other monetizable things that I think you can share, like even merchandise for that matter. Yeah. I was reading this news article now that how our content creators are going to be like this huge business vertical altogether. But now most content creators are starting their own production houses, starting their own merchandises, their brand. Yeah. There are content creators who are starting up restaurants. Like I have a lot of them in Goa who have started their restaurants. अरे तो वो वाला time है ना अभी कि founders want to become content creators want to become entrepreneurs. अरे ये time क्यों आ गया यार अब? सब जिसने पैसा बना लिया उसको लग रहा है कि कोई जानता नहीं है, जिसको सब जानते हैं उसको लग रहा है पैसा नहीं है, तो दोनों को साथ में होना है. तो सब टॉकिंग टू समबडी एंड ही सेड कि आपने कभी नारायण मूर्ति या रतन टाटा इन सबको इतने सारे PR इवेंट्स करते हुए देखा है या सोशल मीडिया चलाते हुए देखा है.
And now all of them are on social media, right? And yeah, them are pretty active on social media because they just realize that you cannot be a businessman or a businesswoman anymore who's behind the wall. Like, you have to be out there at all points in time, because now people are done with brands. किसी को brand से associate उन्हें लोगों से. Yeah. I'll just do a plug-in here. That's why we are doing personal branding for founders. Because something I've realized that obviously brand से non-living है ना. तो अगर तुम श्रुति का business works because Shruti is popular. And you know, lot of time founders will tell you this, like, जिनको भी आप अगर pitch करते हो, they'll be like, अच्छा इससे मुझे धंधा नहीं मिलेगा. Of course इससे आपको business नहीं मिलेगा. It just increases your credibility कि आप कभी business लेने के लिए जा रहे हो, and if you are well known, the chances of you converting that pitch is much faster. Or well known and trustworthy face in there. For sure. And you've had a good following for a while, right? I think it started with Twitter, now it's LinkedIn, maybe Instagram is also. It became the biggest. For sure. Now, one thing I realize is that you are definitely very outspoken. Politically, business-wise, for females. Sometimes it can come across as crass. Sometimes it can be, why is a female leader talking like that, right? Tell me, what was the hardest part of being a female news anchor? It's so difficult. मतलब इतना चिढ़ होता था कि मतलब जैसे अभी मैं बता रही थी कि रवीश कुमार को कोई नहीं पूछता ना कि उन्होंने आज यही कपड़े क्यों पहने हैं, उन्होंने एक ही ब्लेजर क्यों पहना है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन हिज कंटेंट. बट विद विमेन आई हैव सीन, मतलब हमको कमेंट्स में आ जाता था सोशल मीडिया पे कि इसके पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या. एंड यू नो, लाइक विमेन हैव दिस प्रेशर दैट यू नो इफ यू हैव टू कीप one, you have to constantly look good, like as if you never age, you never put on weight, you never. And I've been a chubby person since forever. मतलब ऐसा लग तो नहीं रहा है श्रुति, but sure. But for I have been like this. वैसे नहीं कि मुझे thyroid हो गया और मैं मोटी हो गई, या मुझे PCOD हो गया और फिर मुझे fat आ गया. I was always like this. I love my food. And फिर आपको जब बोलते हैं कि आपको you have to lose weight, which is also still fine कि आप उसको health का angle देके you can stay with it. But I remember this time when production में से बोला था आपको एक acne हुआ था, and they were like ये pimple को कब तक ठीक कर लेना. I was like, how do I do that? And that's when I was very offended actually. और फिर मैं गई थी अपने channel head के पास, and I was like, okay, I'm not a Barbie doll that you've put in front of the camera. Yeah. I want to do real journalism, so put me on the ground. And that's when I got my reporter beat. And it was like, okay, I think you are mature enough to go on the ground. Yeah. And that's how I started reporting. And you know, because जब तक आप TV के सामने होते हो, you know, you are the face of the channel, and you know, you have to be there is a certain mold that people want to see you like. Yeah. Like a woman should look like this, and you have to constantly, because imagine I was 19, 20-year-old, makeup every day, and this is layers and layers of makeup जो आपको lighting इतना heavy होता है, आपके बालों को रोज स्टाइलिंग हो रहा है. हमको वाउचर्स मिलते थे चैनल में से आपका वैक्सिंग वगैरह करवाने के लिए, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग. Wow. Yeah, so we used to get that, and you have to constantly keep like आपके कपड़े, आप कंटेंट पे उतना फोकस नहीं कर रहे हो. What did males get in terms of vouchers? मतलब उनका तो पूरा मतलब फोटो होता था ना कि उनको तो अंदर तो कुछ भी पहन लो, ऊपर ब्लेजर ही पहनना है आपको. Yeah, like that was pretty easy, and they could, doesn't matter how they look. They have to be intelligent. Women have to be pretty and also intelligent if you want to be replaceable. So I think women, but this is something I also see now, right? Even as a founder, the kind of effort, and not just as founder, even if you're doing a job, women in general have to think about multiple things that men never have to care about, right? Like if tomorrow there's an award ceremony where I have to go to, I have to find out कि मैं क्या पहन रही हूँ, कौन लोग आ रहे हैं, उनके सामने कैसे कपड़े मुझे पहनने चाहिए, कैसे बैठना है मुझे, कैसे अगलना है. These are things that men really don't have to think about at all. And I don't know if this is a pressure that we take ourselves and nobody's giving it, or because बचपन से सब conditioning हो गया है. Yeah. But yeah, women have to think. I mean, as a founder, even if I'm going for meetings, like now I go so much in villages and, you know, in places which are very, very conservative. तो आप क्या पहन रहे हो, क्या आप बोल रहे हो. Yeah. Sometimes I just said things which would be pretty normal हमारे बीच में, but वहाँ पे उस चीज़ का बहुत बड़ा हुआ. Yeah. I can totally imagine. In fact, you know, जब से content कर रही थी तब से एक बहुत ही passion था मुझे करना था ये जो मैं नहीं कर रही हूँ. But podcast, like I'll interview people and there will be drinks. And you'll be having drinks and you will be talking. But as a female founder or a podcaster or interviewer, you can't do that. I didn't want to. It didn't even occur to me that I can do it. Because comments भी हमी को ही आते हैं और हम ही एक दूसरे को देते हैं. आप देखोगे कि my mother would not go to kitty parties क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं होते थे हर kitty party में अलग कपड़े पहनने के लिए. और वहाँ पे आपको
दूसरी औरतें ही बोलती कि अरे ये कपड़े तो आपने उस दिन पहने थे, ये कपड़े तो आपने उस दिन पहने थे, So हमें true. खुद याद नहीं होता कि हमने क्या पहना था, बट दूसरे जो नोटिस करते हैं, we have that kind of mental bandwidth जो उन्हें याद रहता है. तो आई थिंक औरतों ने हमेशा से देखा है कि अरे ये कपड़े आपने यहाँ पहने थे, ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो अब मैं ये कपड़े वापस नहीं पहन सकती. Yeah. और आई कैन रिपीट दिस आउटफिट और दिस मेकअप एंड थिंग्स लाइक दैट. That makes so much sense. In fact, that brings me to my next question, right? Because it has come up from what you have said. जब लिखना शुरू किया था मैंने तो ऑर्गेनिकली क्या होता था कि आई यूज्ड टू राइट अबाउट फीमेल्स, विमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. और ऐसा था नहीं कि यही है टॉपिक जो मेरे को लिखना है. वो ऑर्गेनिकली कोई टॉपिक आ जाएगा एंड आई विल राइट इट. ओके. एंड somehow because of everything that I was reading on the internet, it almost felt like मुझे ये बोलना ज़रूरी है कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट. तो 2014-15 में ही होता था. मैं बॉम्बे उस टाइम शिफ्ट हुई थी. एंड फिर पता है कैसे फेमिनिज्म जर्नी ऐसे हुआ कि मैं पार्टी में जाती थी तो लोग ना ऐसे ही, एक्चुअली उस टाइम फेमिनिज्म का मतलब होता था कि ब्रा बर्निंग फेमिनिज्म. इट्स नॉट फेमिनिज्म. या लाइक या तो तुम पागल ही हो रहे हो या तो तुम कुछ नहीं हो. तो मुझे लगता था कि पागल वाले ही होते हैं. तो मैं एक्सप्लेन करती रहती थी. सो आई यूज्ड टू गो फॉर पार्टीज एंड somehow organically people used to say that some comment they'll make and then they'll say ki Diksha, now don't start your feminism shit. And I would look at them, I'm like, how did you assume that I'm a feminist? But because of these comments, I started thinking and I started reading up. What is it? Like, am I? It was a discovery, like it was an introspective journey for me. And then I started, I trained myself to be a feminist, right? So I would go on dates. For example, उस time भी यही होता था कि I would actually judge a guy for not paying. It has happened. And I have absolutely no shame in accepting that because I was told that is chivalry, that is a good man, that is a gentleman. And then I had to really think and I had to really practice and be like, yeah, if you want gender equality, this is how it works, woman. So, pay up. Yes, you pay up. You pay your share. You don't expect the guy to pull a chair for you. You don't expect a guy to, open the door for you. You don't expect your husband to make more money than you. They do great. Yes. It's not a criteria, like a starting criteria. Now, that was my journey. You tell me yours. What has been your journey with feminism? What is your relationship with it? I'm a very feminist. I am not a bra-burning, anti-shaving feminist. Yeah, anti-shaving feminist क्या होता है? They believe that shaving is patriarchal, which I know where they come from and they have also written. I think what feminism gives this space to all of us to choose. क्योंकि आपको कौन सी ब्रा पहननी है, आपको शेव करना है नहीं करना है, आपको मूंछें चाहिए नहीं चाहिए. You choose, and that is one of the things that feminism gives. That is not feminism. I see even equality is not feminism. Feminism is more of giving an equal opportunity to everyone. Yeah. आपने कोई ग्राफ देखा होगा जिसमें एक लड़का है और एक लड़की, दोनों को भागना है. जैसे लड़की के पैरों में 10-10 किलो की डंबल्स लगाती है. Wow. Right? Yeah. Fight running for her is way more difficult than a guy, right? So Yeah. in equal footing. So I think as the word that we want to see as a feminist word, we have to make sure that we give equal footing to every single woman, and I think we are way behind right now. Yeah. So I mean, मुझे सोशल सर्कल्स में, कूल सर्कल्स में, वोक सर्कल्स में फेमिनिस्ट बोलो मत बोलो, आई नो व्हाट माय जॉब एज अ फेमिनिस्ट इज टू डू एंड प्रोबेबली आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू डू दैट. आज की तारीख में भी आई गो टू विलेजेस जहाँ पे लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता है. वहाँ पे 8-9 साल की लड़कियों की शादी करा दी जाती है. इट्स वेरी वेरी कॉमन इवन नाउ. सो आई थिंक आई विल फोकस माई एनर्जी ऑन दैट रादर देन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ या मैं फेमिनिस्ट हूँ. बिकॉज ये सारा वोक सर्कल में बात होती है और वोक सर्कल में सभी वोक है, राइट? तो मैं आपको और वोक करने की कोशिश करूँगी, राइट? यू डोंट नीड दैट वोकनेस एनी मोर. सो either you will be offended or you will be supportive of me and none of that matters to me. Agreed. Oh my God, that is such a good thing that you said about the dumbbells because एक दो बार ऐसा हुआ है कि I have a conversation with a friend and वो बोलते हैं कि यार वो लड़की इतना privilege के साथ बात कर रही थी कि ऐसे क्यों, हमें प्रूफ करने की क्यों ज़रूरत है कि we have to be treated equal. ऐसे why can't it come naturally to the person? I said sorry, ऐसे तो starting line ही same नहीं थी ना, तो हमें तो करना ही पड़ेगा. मैंने तब sorry कि ऐसा हो गया कि that is the gender we come from. The more you go deeper into it, there's a caste angle also. Yeah, there is that privilege also that we have. Yeah. So unless you acknowledge that, either you are like my father, right? उसको पता भी नहीं कि feminism का definition क्या होगा. Yeah. He's the most feminist person. Agreed.
So you don't have to be क्या बोलते हैं politically correct all the time, but you can just show it in your practice. And उन्होंने अपनी बेटी को आज सबसे लड़की मतलब उन्होंने पढ़ाया है, मतलब द काइंड ऑफ पीपल लाइक ही लेफ्ट हिज फैमिली फॉर मी, ही हैज फॉट विद हिज पेरेंट्स, ही इज नॉट स्पोकन टू हिज पेरेंट्स फॉर इयर्स जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू सपोर्ट मी एंड दे डिड नॉट वांट मी टू गो आफ्टर अ पॉइंट, लाइक वी कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली एंड मतलब एक पॉइंट ये हो गया था कि एक तो मम्मी के घर से दहेज थोड़ा कमाया था तो मम्मी ज़्यादा पसंद आती है ज़्यादा सब लोगों को, एंड नाउ थैंकफुली थिंग्स आर बेटर एंड आई थिंक दैट फैमिली हैज आल्सो ग्रोन विद टाइम. बट तब मतलब जो बहुत ऐसी मानसिकता हुआ पे भी, तो पापा ने मतलब बहुत लोगों से लड़ाई की. मतलब मैं जब पैदा हुई थी तो मम्मी मुझे बताती कि मतलब बहुत खुशी का माहौल Of course, yeah. तो वहाँ पे ना जैसे गुजरात में पेड़े देते हैं जलेबी देते हैं, लड़का होता है तो पेड़े बटते हैं, लड़की होती है तो जलेबी बटती है. एंड माई फादर एट दैट टाइम उन्होंने पेड़े बटवाए थे जब मैं पैदा हुई थी तब. Somebody very close in the family and I was a very ugly child when I was born. I was very impoverished and I was very ugly. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पे आर्मी का हॉस्पिटल था, उसमें डिलीवरी हुआ था मम्मी का, तो मैं बहुत ही मतलब बीमार पैदा हुई थी. एंड समबडी हैड सेड कि इतना गंदा बच्चा तो हमारे घर में कभी कोई हुआ ही नहीं है. तो और हमारा जो फैमिली है वहाँ पे सब बहुत ही सुंदर है. एंड तब ये चीज़ें बोला था, तब मेरे पापा ने बोला था कि इसके सब बच्चा पूरे खानदान में होगा भी नहीं, मैं इसको ऐसा बनाऊंगा. यू नो दैट्स द काइंड एंड आई थिंक that is feminism put in practice, rather than us writing on social media okay this is feminist not feminist. And I think feminism भी ऐसी चीज़ है. Sometimes I would have been non-feminist also, like I would have unintentionally done things that are not very feminist, like, but I have learned over time that okay this was wrong, this is right, this is the right way to go about it. Like sometimes even to tell, अब जैसे बहुत ही छोटी सी बात है कि अगर आप किसी गांव में जा रहे हो और वहाँ पे लड़की की शादी करा दी और आप as a feminist this is just too wrong, right? But for her social setup you do not incite her in a way कि वो social setup को छोड़ के वो अपनी जान को खतरे में डाल के वहाँ से निकले, right? So you have to like now understand the nuances also कि कहाँ पे applicable है, what actual feminism is, and just try to create that platform जहाँ पे everybody comes together, everybody has the same equal footing, and that is something I try to practice in my life, in my companies, in the products that we create, in the jobs that we create. So yeah, you try doing that one step at a time. Let's get to that then, right? You've been talking a lot about going to villages. The fact really is about Indian politics is that we are 20th from the bottom in terms of representation of women leaders in the government or basically authorities in power. And I feel that how can we complain about policies and systems if there are not enough women only as leaders जो बनाएंगी ना ये, अगर उनको पता ही नहीं है तो कैसे बना देंगी. तो and you are someone who is very closely associated with politics. Now tell us about your company, what you're doing with Indian Action Project, and what is the big dream with it. So Indian Action Project started with a very specific goal कि governance जो है वो efficient होना चाहिए. Like I have huge trust in India, very vision Bharat, because I think like if you see historically the way we have grown, और ऐसा नहीं कि हम बहुत ही बढ़िया कंट्री बन गए, नहीं, we are long way from that, but जो वो acceleration, जो growth हमने वो जो देखा, percentage growth that you see, we have done really very comparatively to other countries who started at the same level. And I think there's a huge space to go और आगे, but जितना बड़ा है इंडिया उतना ज़्यादा complicated भी है और उतने ज़्यादा हमारे problems भी है. तो पहले I was on the other side where I was like अच्छा system ही खराब है, ये खराब है, वो ही खराब है, and then you start, when you become an entrepreneur, then you start finding solutions to every problem, and then you start thinking okay, like, how do you fix this, and सब तो मैं एक जन्म में like ना मैं ना मेरा पूरा टीम मिलके आप पूरी देश को तो fix कर नहीं सकते. But then you pick okay few things, right? Indian Action Project में we started, it's a civic tech company where we're working on civic related issues and how you can use technology and how you can use organization design to make that system more efficient, because बहुत सारे unnecessary inefficiencies है जो जब वो rules आए थे तब उनकी ज़रूरत थी और अब शायद उनकी ज़रूरत भी है, and there are better ways available now to do those things better. So for example, we started with the bare minimum, which is the MLA, right? Like the MLA is the representative of the people, the building block of the democracy of the country. But अगर आप एक MLA का लाइफ देखोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होता है उनका और इतना इनएफिशिएंट हो जाता है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कि ज़्यादातर टाइम एक MLA का जॉब बस उतना ही हो जाता है कि वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया में, या किसके मरने में जा रहे हैं, या किसकी बर्थडे में जा रहे हैं, या किसकी शादी में जा रहे हैं.
Yeah. कौन से इवेंट में वो फीता पैक रह जा. And I don't think any MLA wants to become that when they stand for elections. They उनका जो job role है is to work on policies, to make sure that जो legislation है वो लोगों तक पहुँच रहा है, लोगों को policies के benefits मिल रहे हैं. So like we built a product for Jansaman which is trying to bring efficiency in MLA's life. जैसे हमारे पास वो है, हमारे पास में इतनी सारी tools हैं, हमारे Slack है. Politics is so unorganized. Indian politics so unorganized. सब कुछ phone call पे चलता है, सब कुछ WhatsApp पे चलता है. There is no track of anything. और इससे आई डोंट थिंक एमएलए को उतना फर्क पड़ रहा है जितना लोगों को फर्क पड़ रहा है, राइट. एंड दिस काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज नॉट अ गुड इनफ रीजन कि किसी को 1 किलो राशन में चावल मिल रहा है तो उसमें आधा किलो तो प्लास्टिक है. मतलब हाउ इज दैट जस्ट फेयर, राइट. देयर इज सर्टेन इंटरवेंशन दैट यू कैन हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम एंड नॉट जस्ट डू इट एज अ लाइक अ पॉलिटिकल थिंग कि हाँ मतलब नहीं हमको धरना करना ही करना, बट और ऐसा क्योंकि नहीं है कि सिस्टम में लोगों को काम नहीं करना. इट्स नॉट लाइक द politicians are really bad or they don't want good for the people, they only want good for themselves. ऐसा नहीं है, everybody wants to do the same, just that system और chain इतनी complicated है. So with our products we try to fix those chains. Like so we have a MLA का software, constituency management software that we have. It is trying to bring accountability on the end of the MLA also and to make the MLA more reachable for the people. Then we have a program called Jansaman which is helping people avail all the government benefits that you have. आज अगर आप देखोगे हमारे गवर्नमेंट बेनिफिट, जब आप बजट का दिन होता है, जब बजट का पूरा स्पीच सुनोगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का, इंडिया हैज सो मच ऑफ मनी एंड दैट एलोकेशन इज सो मच एंड एवरी ईयर द इट्स लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज दैट जस्ट लैप्स बिकॉज लोगों ने बेनिफिट नहीं लिया. और अगर ये बेनिफिट मैं मानती हूँ कि अगर 50% लोगों को भी पूरी तरह से मिल जाए तो इंडिया मतलब पॉवर्टी से बहुत बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है. Wow. We thought, okay, if this is also an inefficient system, because even you and I, if I ask you what are some government schemes you are applicable for, you would not know. Yeah. I would not know. And that was one of the easiest low-hanging fruit for us. So we picked that up. And then we built an engine, which we call like a tender for government schemes. So basically put in your details और आपके criteria, आपके preferences के हिसाब से it will match you to all the government schemes that you are eligible for. फिर आपके विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन सबको हम ट्रेन कर दें, हेल्प पीपल अप्लाई फॉर दीज स्कीम्स, हेल्प देम अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, हेल्प देम अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. हाँ, तो वो इन सारी चीज़ों. यार ये क्या नाम है जरा बताना, मेरे को भी चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स. Is it on iOS as well? The problem, imagine अगर आज अपने आपके और मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो जिसने नहीं पढ़ाई लिखाई डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा. I know women के लिए था, but I never applied because it's a long process, man. Like there is something that the government has done. What is they have designed very good policy. Yeah. But वही कि सिस्टम चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो नीचे उतना पहुंच नहीं पाते. Even if they wanted to reach. Is it on iOS or is it only on Android right now? तो बना दो यार. वहाँ पे चार्ज कर लेना iOS वालों के लिए कि सिर्फ MLA स्पेसिफिक बना है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक है. सो विच इज समथिंग दैट MLAs कैन रोल आउट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यहाँ पे नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स, दे कैन अप्लाई फॉर, दे कैन फाइल देयर ग्रीवेंसेस. दैट ग्रीवेंसेस ऑल्सो हम लोग MLAs को पूरा ऑफिस सेटअप करके देते हैं. तो पूरा टीम भी हमारा होता है जो बैकएंड में काम कर रहा होता है. एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम विद इन 7 days. Wow. We are setting up that kind of a system for an MLA where everything is accounted for, that every invite you are getting is accounted for, every public meetup you are doing is accounted for, so everything is noted anywhere. But such an interesting model. Tell me, how did you think about it and how did you find your co-founder? You were telling me about कि तुम्हारे तो कुंडली में ही गलत है. Yeah, I think we've been connected for 2 years. Wow. This happened this year that okay, that we had. He said, okay, I want to be, he's a tech person and he's a very, very senior tech professional. And बस बातों में बस एक चीज़ था कि हमको, we are not both experts at what we are doing. We don't know कि चलेगा या नहीं चलेगा. Intent दोनों का match हो गया कि हमारा intent ये है. So as long as we are sticking to that intent and we are working with that intent on building the company. Where did the intent come from? Did it come from Chaaipani? A lot of conversation for both of us. Yeah. Manu was also very politically outspoken. I was also very politically outspoken. Both of us were entrepreneurs. So both of us had this thing कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे चिल्लाना नहीं है, हमको कुछ करना है, right? And then there is one way of doing it is just charity, like plain charity that you do, which is a very non-sustainable way of going about it, I think. Because again, आपको मैं कितना ही दान दूंगी, right? अगर मैं आज भी अगर लोगों को बोलते क्राउड फंडिंग में यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करो, वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करो, आज एक मिडिल क्लास वाला टैक्स भी भर रहा है,
आज वो अपने सारे ड्यूटीज अच्छे से हर चीज में खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीदते हो आप टैक्स भर रहे हो, आप ये सब करो, उसके बाद में आपको बोल रहे हो कि आप डोनेशन भी करो, एंड देन यू आल्सो गिफ्ट दैट पर्सन Yes. donating, whereas the government has a beautiful system in place. Yeah. So we thought, okay, you go to the organization that has the most money. I think government is the richest of the organizations of the whole country. So how do you make that more efficient? And that's how we're partnering with multiple government organizations and multiple government officials on making their jobs easier so that they are able to So it's not like only government in power. do something good for the people of their areas. Now you are in a space which is definitely more backward in terms of equality, etc. Right? I'm sure that the sexism ka bhi quotient will be much higher in politics, in villages. You were in fact telling me you have visited many villages. How many villages have you visited, and what is the scene like in terms of equality, getting respect? But yeah, again, I was telling you how you have to think through, and that's not naturally come to us because हम उस सोसाइटी में बड़े नहीं हुए जहाँ पे हम एक एक शब्द को माप तोल कर बोल रहे हैं. बट जब आप गांव में जाते हो आपकी कौन से शब्द का क्या मीनिंग निकाल दिया जाएगा आपको वो भी नहीं पता होता है. लाइक आई विल गिव यू दिस इंस्टेंस दैट किसी के घर पर मैं गई थी खाने के लिए, कॉलेज इन्फ्लुएंसर, और how you tease young boys, right? Yeah. Oh, do you have a girlfriend? Do you have something like this? Yeah. मैंने बस ऐसे उसको चिढ़ा दिया होगा कि अरे he was having a girlfriend, and the wife heard in the kitchen, and she told the husband, you're never going to work with her, she's too forward to work with. Yeah, that's the kind of sexism. फिर मैं जैसे आपको relatively aware of शहरों में भी होता है कि मतलब I remember going to a meeting, like this really senior person had called me to the meeting to introduce me to his team. There was a bunch of about 20-21 people in our office. I was the only woman there, and they would talk, and I had two of my team members with me, and they would talk, but they would not talk to me. Yeah. Talk to them. अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही तो जवाब यहाँ पे जा रहा है, जवाब यहाँ पे आ रहा है. Yeah. And it's taken them about 2 years to even warm up to me, to directly call me and tell me something, because you're just invisible to them, or maybe you are making them uncomfortable, which I thought it that way, that maybe I am making them uncomfortable because they are not used to talking to women. I love how you're telling me this because मेरे first set of co-founder, ठीक है? I've never said this, so it may be really shocking to people, right? On Akkar Bakkar. He used to not shake my hand. He used to not sit as a co-driver. मैं drive करती थी, वो पीछे बैठते थे. And then I used to enter the office, tiny office, and यार बहुत ही crazy काम कर रहे थे बक्कर बक्कर में, millions of views within 3 months or something, right? And that was my work. But I engaged, dude. I entertained. दीक्षा आ गई हो तो चाय बना दो. हाथ नहीं शेक करना है. अरे तुमको क्या ही लड़कियों का काम ही ये होता है. Yes, yeah, because he assumed that that I'm teaming up because I can somehow seduce his friends into doing something. Literally, I'm telling you, this is real story. And I was shocked, yeah. And then one day I got up and I was like, yeah, if I get, if my character gets pointed at again, I'm going to walk off. And that's what I did because it, of course, happened. And, yeah. को मेरे कैरेक्टर को जो बोलना है बोलो, तुमको जो मॉरल पुलिसिंग करनी है करो. I am not walking out. You are uncomfortable, you walk out. Yeah, वो चाय नहीं बन रहा है, you walk out. I am not doing that. आपने बताया कि अक्कर बक्कर में you walked out. हाँ. I was like, that's a very stupid thing, but I've done that foolish thing. हाँ. और thankfully मेरी लाइफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि तू इतनी स्टूपिड हो रही है, go back. तो एक तो ना हमको बचपन से बोला कि लड़की की इज्जत कहना है उसका, ठीक है, और मतलब मेरे कैरेक्टर पे कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए. My moral compass and all of that. इसको exploit करते हैं सब लोग because they realize कि अगर if there is no way you can hurt her, you hurt her character, and that will protecting that character and that reputation will just make her give up everything. Agreed. So this was in the middle of a election campaign जो हम manage कर रहे थे, and 6 दिन बाकी election की voting को, and किसी ने तो जाके हमारे क्लाइंट थे उनकी वाइफ को बोल दिया कि ये लड़की शी इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड देयर इज समथिंग बिटवीन हिम एंड हर, दैट्स व्हाई ये सिर्फ उसकी सुनते हैं. एंड नाउ शी इज अ हाउसवाइफ, राइट? आई कम अंडरस्टैंड वेयर शी कम्स फ्रॉम कि ना वो मुझे जानती है, ना वो उनको इतना एक्सपोजर है, ना इन सब चीज़ों को देखा हुआ है उन्होंने कभी भी. एंड शी इज जस्ट इनसिक्योर, एंड इन एन इलेक्शन कैंपेन अ वाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अ हस्बैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Agreed. As a couple. And 6 days before the election, she created an issue and told everybody, I don't like this girl and she's this, she's that, which came to me. And the first thing I was like, I am leaving this campaign, मैं वापस जा रही हूँ, और मैंने अपना पैकेज करके मैं गोवा चली गई. 6 दिन में कैंपेन होने वाला
this is crores of rupees at stake, right? Lakhs and crores of rupees at stake. And I am just gone. I was like, you can't talk shit like this about me. हाँ. And I was ready to lose that just क्योंकि मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया. And thankfully, like, my parents were very supportive. My father was like, are you mad? Like, if somebody has said something, उसकी वजह से तू थोड़ी ना अपना काम छोड़ के चली जाएगी. You come back. Yeah. And I went back. My female friends put some sense into my mind, and I took my campaign. I was like, जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोलो. Yeah. I will do my job. I will do my work. I have a purpose that I am sticking to. बाकी आपको sexism करना है नहीं करना है. But that was also a realization कि मतलब सोसाइटी ने ना इतना औरतों को वी हैव ऑलवेज बीन पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, राइट? यू आर ऑलवेज कंपीटिंग विद अनदर वुमेन. सो औरतों को सबसे ज़्यादा, लाइक से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउस वाइफ, her entire identity depends upon her husband. Yes. Right? Her financial security depends on the husband. Unka social status depends on the husband. Yeah. Whereas it's not the same for you and I, right? Like, Yeah. we have an identity of our own. We have built things of our own. हाँ. तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ ही उनकी हस्बैंड है. और उनको लगता है कि अगर कोई और लड़की उनके हस्बैंड को लेकर जा रही है तो उनका तो पूरी Life is over. एंड दैट्स वाई दे बिकम सो ओवर प्रोटेक्टिव कि थोड़ी सी भी अगर कोई बात होती है, और एक तो उन्होंने बाहर देखा भी नहीं होता कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, सब नॉर्मली भी बोल देते हो और उसमें देयर इज नो बैड फीलिंग्स अबाउट इट. Yeah. No, but interestingly, it's not only a housewife thing. It's a very successful, progressive woman thing also, who sometimes, their identity is attached to the husband. Still, वो ही नहीं हो पा रहा है, तो ये कैसे होगा, श्रुति? I've had in my families also, right? Like, there will be women who will say things like this करी रात रात जब मैं न्यूज़ रिपोर्टर थी तो मैं बहुत लेट वापस आती थी. And there were people in my family also who would say यार इनकी बेटी तो क्या करती है. अब मैं गोवा रहती हूँ तो उनको लगता है मैं रोज ड्रग्स करती हूँ, मैं पार्टियाँ करती हूँ. तो थैंकफुली मेरे मम्मी पापा ऐसा शील्ड बन गए ना हर चीज़ में. They don't let bullshit come to me. They will just deal with everything on their own. And I think they are at a point now where वो नॉइज हम तक पहुँचती नहीं है अब. तो आपको जो भी अंदर अंदर बोलना है आप बोलते रहो, अब हम तक वो चीज़ें आ नहीं पाती है. But they would, and women would do that to other women. Agreed. It's worse. But now if you think on their end कि वो ऐसा क्यों करती हैं, Yeah. तो yeah, now you understand. It's Bitchaari to bitch journey. It's such a wrong time. Which, where, on that spectrum, where are you right now? Bitchaari is fine, dude. Come on. You have to plug in. What are you doing? Guys, can so okay, I was Bitchaari. I didn't know the difference between both. No, very interesting. I think I want to know. I know that you're based in Goa, and I actually read a lot of your posts, and you've said it a lot as well about your therapy, about how much you love sleep. You've moved to Goa, pura team leke. Tell me a little about all of this. Ki yaar, how are you living your life on your terms right now? And when did you decide to take therapy? How has that journey been as well? And why did you take it? I started in 2019. 2019 में on and off I started taking therapy. 2018, 2019 से. Because I think as a founder, it's impossible, and I don't know how to find founders who do not have a therapist function. But if you want to function, there's so much of bullshit coming your way every single day that you need somebody. And तब मुझे thankfully, because I'm a psychology student, I knew that this is a scientific way of going about it. कि अगर आज मैं upset हूँ या आज मैं sad हूँ या मेरे को anxiety attack आ रहा है, मुझे पता है anxiety attack क्या होता है. मुझे घबराहट और anxiety attack के बीच का difference पता है आज की. Wow. जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. So thankfully, because I had studied it, it was way easier for me to convince myself to go to therapy. Yeah. But more than correctional, जो कि अभी भी चलता रहता है ये सारी चीज़ें, मतलब अभी भी correctional होता है. So from that to growth, like that's how the journey has been between me and my therapist. That okay, कोई problem नहीं है life में, but okay, how do I move forward? How do I grow? So that's how it has been. About Goa, I moved about 4 years back. हाँ. बहुत अच्छी लाइफ है मेरी, बढ़िया घर है मेरा, बहुत अच्छा बिल्ला है मेरा. आई हैव अ ग्रेट सेट ऑफ फ्रेंड्स इन गोवा. आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, ग्रेट सोसाइटी, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं हमारे. मैं एक तो बहुत कम रह पाती हूँ गोवा, बिकॉज माई ऑफिस इज ऑल्सो इन अहमदाबाद, सो आई हैव टू कीप शटलिंग बिटवीन बोथ द प्लेसेस. सो हार्डली ऐसे महीने की 10 दिन मैं गोवा होती हूँ, बट वो 10 दिन मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ. एंड आई थिंक देयर इज समथिंग बिटवीन मी एंड द सी. लाइक आई एम हैप्पियर व्हेन आई एम इन प्लेसेस व्हिच आर क्लोजर टू द सी. Yeah. So I mean, Goa has been very lucky for me, mental health wise. Yeah. No, that makes so much sense, because recently I was in Goa. Multiple times I was in Goa recently, and I realized, like, I used to be very happy in Bombay, for example. Whenever you're
close to the water. It's water therapy. How has Goa mentally helped you? Like, what do you think has changed in your life, in fact, ever since you moved? So it's the best of both worlds. Okay, that's why I recommend this state, because some days I want to party, some days I want to be with the nature. Goa offers both. Like, Yeah. आपको सिर्फ पंजिल से कभी north जाना है, कभी south जाना है. You just have to decide between both of that. It's a lot of peace for me in Goa. I have networked way more meaningfully in Goa. मतलब जब मैं बॉम्बे से आई, मूव फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, तो जब उसके पहले मैं गुड़गांव थी 2 साल, तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े शहर से वहाँ जा रही हूँ, इट्स अ डाउनग्रेड. अगर आपको लगता है कि आप नेटवर्क नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्किंग इवेंट्स में नहीं जा रहे हो, और यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सर्किट वेयर यू आर पार्टिंग विद पीपल एवरी डे, which I did so much in Bombay. It was insane. After a point, it was just a financial massacre to party so much. Yeah. Yeah, so Goa में जाके there was that point that okay, like I'm not partying anymore. I'm deciding where I'm going. I am deciding where I'm not going. And people have also thankfully started understanding कि यार इसका मूव नहीं है पार्टी करने का, तो ठीक है. एंड गोवा एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे पूरे देश में से लोग आते ही हैं. मतलब साल में एक बार तो सबको आना ही है वहाँ पे. Yeah. I end up meeting way better. I have way better meetings with founders and other CEOs and politicians and whoever my clientele is, right? Yeah. क्योंकि वहाँ पे वो एक तो chill mode में आते हैं. So we are actually interacting not just on business terms, but we are also Personally. interacting with each other. So Goa has done that for me, and that's become a place where I go to rest. क्योंकि जब मुझे पता है मैं गुड़गांव बॉम्बे दोनों में रह चुकी हूँ, और अहमदाबाद में भी अब रहती हूँ, but the kind of social applications you have in these cities, right? कि आप एक बार वो पार्टी सर्किट में आ गए हो या वो नेटवर्किंग सर्किट में आ गए, you have to keep showing up. Yeah. And गोवा में जाके I have that peace. I wanted to actually know, because you told me that at Chaaipani you had angels. Do you also have angel investors in I? AP is completely bootstrapped. Okay. Chaaipani में we did one round, it was a pre-seed round. Okay. उसके बाद we never raised again. Right now we've started the process of buying back the shares and giving an exit to the investors. That is so awesome. When did you get that funding? How did you get that funding? I feel like, so I always ask because it really helps anyone who's starting out. So tell me, how did that go? Chaaipani was not intent start with funding, it started with crowdfunding. Okay. So पापा तो पैसे नहीं दे रहे थे ना सब करने के लिए, तो मैंने क्राउड फंडिंग किया था विशबेरी पे जाके. वहाँ पे लोगों को बोला था चंदा, मतलब एक चीज में चंदा मांगना है, राइट? तो क्या आप थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे दे दो. तो वो कर आके 5 लाख रुपए मैंने इकट्ठे किए थे, जिससे चायपानी. और तुमने बोला क्या कि what is this funding for? I told them that I want to start a platform called Chaaipani. It's going to be a home for inspirational stories and people who are doing good impact work. उन पर फोकस करके स्टोरी बनाना है. That was the only objective, क्योंकि 5 लाख में आप उतना ही कर सकती हूँ. इनफैक्ट मैंने बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया था कि मैं 5 लाख में क्या क्या कर सकती हूँ. 5 लाख ऐसे ही खत्म हो जाते हैं आपके. Great. मैंने वो करके क्राउड फंडिंग किया था. फिर वो 5 से एटलीस्ट हमारा एक MVP बन गया कि मेरे पास एक प्रोडक्ट हो गया, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हो गया. कि हाँ मैंने इतनी स्टोरीज की है हम लोगों ने मिलके, और इतने हमारे पास व्यूअर्स है, हमारे पास एडवर्टाइजर्स हैं. वो करके देन देयर वाज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर जिनके थ्रू वी रेज्ड आवर फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग. Okay, so she basically lined up investors. So we have 8 of them. Out of them, 5 are people who I already knew. So very interesting story. जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो इवेंट्स के लिए आप स्पीकर्स को रीच आउट करते हो बुलाने की. Correct. So the first investor that Chaaipani had was one of those speakers who had stayed in touch with me since then. Yeah. And he's still a very very personal family friend to us. And उनको मैं फर्स्ट टाइम गई थी बोलने के लिए कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, should I do this and not, and if you are saying yes you have to give me some money because I want to start. And so he was the first person. The second person was somebody I had connected on Twitter. Yeah. He put in some money, and then this investment banker got involved, and then she pitched it to multiple investors. So how did you, who told you the concept कि यार investment banker को involve करते हैं? ये मुझे एक इवेंट पर मैं गई थी, तो वहाँ पे मैंने सुना था कि अब ये एक सर्विस शुरू हो गई एज अ फाइनेंशियल सर्विस वेयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डू द कोल्ड कॉलिंग एंड पिचिंग. कोल्ड कॉलिंग फॉर यू, पिच आपको करना पड़ता है, वो एटलीस्ट मीटिंग सेटअप करवा के दे देते. देयर वाज अ फिक्स्ड फी प्लस देयर वाज कमीशन ऑन व्हाटएवर अमाउंट इज रेज्ड. So it was effort on both ends. Like she was also talking, I was also talking. Both of us. Uska bhi, I was the second deal actually for her. So Wow. No, so I want to get to. तो यार recently तो हमने ये news पढ़ी कि more females in the country than men. Did you ever read it in India? 1022 women for every 1000 men. So first thing that came to my mind was कि तब तो सही है, majority अगर हो गई तो फिर probability will increase of more women maybe working, being on the table. see, that's why there are not very many women focused products, right? क्योंकि Yeah. women users है ही नहीं. नहीं, क्योंकि उनके पास spending power नहीं हो. We are of interest though.
we're trying. Just give money. अब second बताओ कि we are actually coming to the end of our very very cool chat, by the way. I'm pretty sure you enjoyed it as much as I have. Tell me, what is the big dream for IAP, which you think will be great for the country, and what is an ideal world for a female leader? An ideal world is where I don't have to protect myself while I'm just doing my job, where I don't have to stress about protecting myself, where I don't have to stress about कि आज मैंने लिपस्टिक का शेड डार्क किया है, is it giving a slutty vibe or is it giving a professional vibe? Where I don't have to think about it, आज मैंने सलवार सूट पहना है और कल मैंने अदर ड्रेस पहना है, तो am I giving a slutty vibe versus a behensi vibe? I do not want to think of those things. There are equal opportunities. As a female founder, probably I don't get asked when I'm getting married. As anybody, I think every woman is done with this marriage वाला question. Yeah. क्योंकि मतलब मुझ में नहीं है. There was this point where my mom asked me if I'm a lesbian. And she was like, yeah, we are okay with that. But I was like, okay, but that's not the point. It's just that I don't want to get married right now. But अब तो मेरे मम्मी पापा भी समझते हैं that she'll make a very bad wife. What? Yeah. I mean, imagine a wife who's just never there at home. तो they realize कि इसमें मैं ना अभी एक होटल में गई थी, तो बाहर मैं किसी के साथ, देयर इज दिस वन क्लाइंट दैट वी वर्क फॉर, सेकंड एंडर ब्रदर टू मी, और उनके साथ में बैठी हुई थी और एक ज्योतिष उनको पहचान कर उनके पास आया और वो बात कर उससे मेरा हाथ देखा एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड दिस एस्ट्रोलॉजिस्ट की शादी कब होगी, तो वो हाथ देखते बोलते कि शादी का योग तो नहीं दिख रहा है. एंड देन दिस गाय वाज लाइक, योग नहीं दिख रहा है, ये योग गिरने लग रही है शादी के. तुम्हारी कुंडली अजीब है यार. Co-founder is dangerous. शादी नहीं हो रही है. Amazing. But I think I will make a very bad wife. So I mean, I'm still not at a place where I can be. Oh my God, Shruti, stop it. But ठीक है, तो you can continue. But I had something in mind, but I'll ask you later. So ideal world for women is that. What is the big dream with IAP? With the Action Project, I think we want to cover every single village of India. We want to have a Jansati. So we have a 2026 dream, which is have at least 1 million Jansatis who we are creating income opportunities for in India. जो अलग अलग चीज़ों के साथ में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर हम किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एटलीस्ट इनकम जनरेशन उनके लिए कर सकते हैं. So 1 million is that word that we have, that we want to have at least 1 million Jansatis across the country. We want to be able to work with at least 300, 200 MNAs and solve their constituency ka problem and make that part very efficient. Yeah. And that's the utopian dream, that at least 80% of government schemes and policies should reach to every nook and corner of the country. That is super cool, yeah. So I'll digress a little. I mean, I'll take 2 more minutes of yours. What you're doing is very difficult for a person to imagine that I can do. How do people reach out to MLAs? How do people imagine that I can work with authorities in power, in the government, etc.? What was, where did you start there in terms of reaching out to the... Well, I don't know, I'm not flaunting about it, but हमेशा Twitter पे से somebody has connected, okay, like you're doing something. So how it started was I started managing elections first. Yeah. So elections करते like now I have done probably about 72 elections now. Yeah. Or a lot of them have become ministers and a lot of them have become MLAs themselves. So then what's the next part? आपने election जीत लिया and really good people who have very good intent of doing things. So what do you do next? Yeah. So that's why we started building products of what do you do next? How do you make your 5 years worth every day of it? Every penny. आपको अगर 1.5 लाख का salary मिल रहा है, तो how do you make sure that you're doing really good things for you? Wow. Yeah. That's how. That makes a lot of sense. Personal branding. So personal branding, because I'm also very politically very vocal. Yeah. जो कि पहले में क्रैश हो जाती थी, बट अभी लाइक आई बिकम वेरी पोलाइट ऑल्सो अबाउट इट, बिकॉज अब मुझे पता चल गया कि मतलब सोशल मीडिया पर लड़ाई करके कुछ भी नहीं होने वाला है. मतलब लाइक यू विल बी ऑफेंडेड, नॉट or someone else will get offended, then you'll get threats. एवरी ट्वीट में अगर हाई लिख दूंगी तो भी कोई ऑफेंड होने वाला है. तो मतलब दैट इज वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि मतलब आई कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी. आई डोंट वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी, बट yeah, social media से ही like most of my political connects happen. Over also like something interesting that okay, you think about this like this, I think about it this way. How can we collaborate and do something together? And yeah, so वो समझते, because इतना फिर जब constituencies में जाते हो तब अभी अगर मैं यहाँ बैठ के कोई प्रोडक्ट बना दूँ जो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं ग्राउंड.
Of course. तो वो काम करते करते हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हैं इनके करने के लिए, सो हाउ डू यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. Yeah. फिर वो आपने एक का काम किया, उसको देख के यू रीच आउट टू somebody else will reach out to you, so करते करते it becomes a network of people. Wow, yeah, that's very interesting. कि तुम पहले ही रूट में ही तुम मिल लो किसी से who will tomorrow be an authority in power, and then you can actually make a huge difference. People I'm working for today who are like nobodies right now, but I know in like next 5-10 years they are going to be really, really big deal in the country. Yeah. So, and that's the kind of energy and investment I put into them, and they are putting into themselves. Yeah. And I know that they will get there, but abhi ke liye Slowly. I just want to work for them because I have the right intent. That is awesome, dude. That is awesome. So, I have covered everything. Next year, Yoso will be a unicorn because of Shruti. Chaaipani तो बनाया नहीं मैंने unicorn. I have done anti-unicorn thing. मैंने investors को exit दे रही हूँ. I am out of that race. नहीं, हाँ, मेरे को लगता है यार. That's a race I don't think you want. हाँ, मतलब Happy funded one. हाँ यार, you know, it has. I realized when we just started working with people, na, leaders, founders, I realized कि यार यही तो करना था. I love working with humans and I love working on their stories. You will realize that you don't need as much money as जितना आपको लगता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए. आपको जरूरत नहीं है वैसे. है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. I agree. तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए. क्वेश्चन क्या? ये है एक्टिविटी. ठीक है, तुम्हें लिखना है अपना ओपिनियन, अपना नहीं, सोसाइटी का ओपिनियन on this page that you would love to throw in the dustbin. Okay, you have one chance only. Opinion from the society about women that you would love to throw in the dustbin. So I am so done with this. It reads all women are out there to seduce men. तुम इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो जितना तुमको लगता है. कि अगर तुम seduce हो रहे हो हमसे तो उसमें हमारी प्रॉब्लम. just throw it on any man. Thank you for landing on the Bitchaari podcast. We love you like we hate you. Please subscribe to our YouTube channel and follow us everywhere. And if you've ever been called bitch, bitchari, bossy, naughty, whatever the hell, please comment and share your stories. I would love to read them.